Greetings, everyone. Welcome to Fluency Series 11. I hope you've been listening to these episodes repeatedly for the best result. For now, let's begin with number 11 on the Fluency Series. Here's the first sentence. मैं पोस्ट डॉक्टोरल करने की सोच रही हूँ ताकि अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को और बढ़ा सकूँ. आपका क्या ख्याल है? ऐसा करना फ़ायदेमंद रहेगा? I'm thinking about going for a postdoc to build on my experience and knowledge. What do you reckon? Do you think it'll be worth it? So, if you build on your experience or on your knowledge, it means आप उसे और आगे बढ़ा रहे हैं. For example, उसे देखो, वो सारा दिन तुम्हारी तरह बैठा नहीं रहता, उसका सारा दिन अपने skills और knowledge को बढ़ाने में जाता है. Take a look at him. He doesn't just sit around all day like you. His entire day is spent honing his skills and building on his knowledge. Second one. तुमने अपना बिजनेस शुरू करने का सोच तो लिया है, पर अगर छोटी छोटी मुश्किलें आएँ तो घबराना मत. ऐसा ही होता है, पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है. Now that you've made up your mind to start your own business, don't let a few minor bumps along the way freak you out. That's just the way it goes. In the end, everything works itself out. So if something works out, it means it finishes with a positive outcome. किसी चीज़ का समय के साथ खुद सुलझ जाना. Here's an example. मैंने तुमसे क्या कहा था? सब खुद सुलझ जाएगा, पर तुमने मेरी कहाँ सुनी? What did I tell you? Everything will work itself out? But did you listen to me? No, sir. On to number 3. आखिर तुम्हें मेहनत का फल मिल ही गया. मिलना ही था. तुमने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तुमने अपना पूरा जोर लगा दिया. At last, your hard work has paid off. It was only a matter of time. You put in every bit of effort or you really gave it your all. सो पे ऑफ सजेस्ट करता है किसी मेहनत या किसी अच्छे काम का फल मिलना. फॉर एग्जाम्पल, योर पेशेंस पेड ऑफ, यू फाइनली गॉट योर ड्रीम होम. देन ऐसा तो होना ही है को आप कैजुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और थोड़ा फॉर्मली कह सकते हैं इट्स इनएविटेबल. सिमिलरली, ऐसा तो होना ही था बिकम्स इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम और इट वॉज इनएविटेबल. फोर्थ वन. मानना पड़ेगा तुम्हें, काम मुश्किल था पर तुमने कर ही दिखाया. I've got to hand it to you. It was tough, but you pulled it off, or you managed to pull it off. So to pull something off means to be able to do something successfully despite difficulties. Here's an example. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने एक हाथ से गाड़ी को उठा लिया. किसी ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि एक सूखी डंडी जैसा आदमी ऐसा कर पाएगा. वाकई किसी के दिखने पर नहीं जाना चाहिए. I couldn't believe my eyes when he lifted the car with one hand. No one thought a dude like him, who is skinny as a stick, could pull such a thing off. Looks can be deceptive indeed. Fifth one. वो एग्ज़ाम में मुश्किल से ही पास हुआ. He managed to just scrape by on the exam. As you would have guessed, scrape by means किसी चीज़ को successfully कर पाना पर बहुत थोड़े मार्जिन से या मुश्किल से. Here's another example. मुझे लगा था तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, पर किसी तरह तुम पास हो ही गए. I had a feeling you'd flunk the exam, but somehow you managed to scrape by. Coming to number 6. अरे वो इंटरव्यू कैसे निकल गया? ये तो मैंने घिसट घिसट कर निकाला था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था. Oh, how did I even get through that interview? I just muddled through it. I was totally clueless. So, to muddle through something means to manage to do something despite having no plan or understanding of it. बिना किसी चीज़ की समझ होते हुए उसे जैसे तैसे घिसट घिसट कर निपटाना. Here's another example. मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, पर जैसे तैसे रेसिपी बुक से देखकर मैंने सब्ज़ी बना दी. I don't know the first thing about cooking. I just muddled my way through the recipe book and somehow made the dish. Number 7. लगे रहो, तुम पक्का सक्सेसफुल होगे. Keep at it. You'll win out for sure. So win out is an ideal casual usage when you become successful after struggle and difficulty. On to number 8. तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, बस कभी भी दिल मत हारना. Your dream will come off for sure. Just never lose heart. So come off खासकर प्लान्स के सक्सेसफुल होने के लिए और होप्स के फुलफिल होने के लिए इस्तेमाल होता है. सर्विंग एन एग्जाम्पल. हमने पूरी जान लगा दी, पर हमारा स्टार्टअप शुरू करने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ. वी गेव इट आवर ऑल, or we put our heart and soul into it, or we really gave it everything we had,
but our plan to launch this startup didn't come off. Number 9, तुम्हें उनसे नसीहत लेनी चाहिए, इतने बड़े टोटल के बावजूद भी वो आसानी से जीत गए, ये उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन का सबूत है. You should take a page out of their diary. Despite the massive total, they managed to sail through to victory. It's a testament to their fitness and discipline. So, to take a page out of someone's diary is a nice idiom to suggest किसी से नसीहत या सीख लेना. And to sail through means to manage to do something very easily. Here's an instance. अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे तो ये गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी. If you think you're going to sail through the exam, then you've got another thing coming. You've got another thing coming, as you just saw, is a fixed colloquial way to suggest गलतफहमी का harsh experience लेने के बाद दूर हो जाना. On to number 10. बड़ी बड़ी ऑनलाइन फेस्टिव सेल्स के चलते छोटी दुकानों का नुकसान होना तय है. With all the online mega festive sales on, small brick and mortar stores are set to lose out or are bound to lose out. Now, brick and mortar stores is a standard term used for real life or physical stores which are not online websites. जिन दुकानों में हम बचपन से जाया करते हैं, the shops around us. The term helps distinguish a real store from an online one. Then, to lose out यानी नुकसान होना, पैसे से ज़्यादा opportunity का या मौके का. Here's an example. आलस के चक्कर में तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया. Being lazy, you lost out on such a good opportunity. Or even more simply, being lazy, you totally blew it. To blow it means to let an opportunity slip by. Example, I've requested the principal to excuse you and give you another chance. Don't blow it this time. Number 11. तुम अपने success का श्रेय या credit किसको दोगे? Who would you put your success down to? So put down to is the phrasal verb you can use when you want to give the credit for something to someone or to some other thing. Here's an example. मैं अपने success का श्रेय या credit भगवान को और अपने parents को देती हूँ, और मेरे success का श्रेय भगवान को और मेरे parents को जाता है. I put down my success to God and to my parents. Another one. मैं अपने कॉन्फिडेंस का श्रेय अपने दोस्तों को दूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. I'd put my confidence down to my friends who went all out supporting me. So, to go all out doing something means to do it with all your heart and soul. उस काम को करने में कोई कसर ना छोड़ना. An example, उसने मुझसे हाँ करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. He went all out trying to get a yes out of me. On to number 12. तुम में सीरियसनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. ऐसे ही चलता रहा तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे. You've got no sense of seriousness at all. Keep this up and you will never amount to anything. So amount to something use होता है किसी चीज़ का end result indicate करने के लिए. It can be used for people and things both. Some examples. पीने के चक्कर में वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया. Thanks to his drinking habit, he couldn't amount to anything in life. Few more examples. बोलने से कुछ नहीं होता जब तक कुछ करो ना. All that talk doesn't amount to much if you're not willing to back it up with action. Another one. You can't just do the bare minimum and expect it to amount to success. You really have to commit. And a final one. If you keep brushing off every opportunity, it's not going to amount to a lot in the long run. On to number 13. ये वही फंड है ना जिसकी रिटर्न्स तुम कह रहे थे बहुत अच्छी हैं, मुझे भी इसका हिस्सा बनना है. This is that same fund you said has great returns, right? I want in on it too, or I want to get in on it too. So if you want in on something or you want to get in on something, it means you want to be included as well. Here are a few more examples. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, मैं हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? That sounds like an exciting project. How can I get in on it? Another one. सब उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं समय रहते इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ. Everyone's investing in that startup and I want to get in on the action before it's too late. Another example. सुना है तुम नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हो. अगर जगह है तो मैं भी शामिल होना चाहूँगा. I heard you're planning a trip next month. If there's room, I'd love to get in on it. And a final one. You're going to that exclusive event. I definitely want to get in on that.
Then on to number 14. वो अपने नए जॉब में मन लगाकर काम कर रहा है, कहता है कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है. He has thrown himself into his new job, says he's getting a real kick out of it. So, to throw yourself into something means to do something with all your enthusiasm, मन लगाकर करना. Here's another example. ब्रेकअप के बाद वो मन लगाकर अपना काम करने लग गई और उसने अपनी सारी एनर्जी नए प्रोजेक्ट्स में डाल दी. After the breakup, she threw herself into her work, pouring all her energy into new projects. Then, to get a kick out of something means to enjoy doing something a lot. For instance, उसे अपने दोस्तों पर प्रैंक्स करने में बहुत मज़ा आता है. वो हमेशा उसके प्रैंक्स में फंस जाते हैं. He gets a kick out of pulling pranks on his friends. They always fall for them. So if you fall for something, it means you get tricked by it. Here's an example. वो एक fraud call था, तुम फंसे तो नहीं ना? That was a fraud call. I hope you didn't fall for it. Then, on to number 15. मैं टीचिंग में जाना चाह रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ. क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता सकते हो? तुमसे बेहतर कौन होगा बताने वाला? I'm looking to go into teaching, but I'm not sure where to begin. Would you mind showing me the ropes? Who better than you to fill me in? So, to go into something means to start a career in something. For instance, कई साल अकाउंटिंग करने के बाद मैं ऑडिट में जाने की सोच रहा हूँ. इसमें मेरा अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी काम आएगा. After years in accounting, I'm thinking of going into audit. I think my accounting experience will come in handy. We also used show the ropes, which means to tell or teach the basics of something. For instance, मेरी मम्मी अपने नए फ़ोन से परेशान हो गई थी, फिर मैंने उन्हें उसके बेसिक फंक्शन सिखाए. My mom was struggling with her new phone until I showed her the ropes. हमने fill me in भी यूज़ करा. To fill someone in means to provide someone with essential or missing information. Here's an example. मैं क्लास के लिए लेट हो गया था और मैंने शुरुआत का लेक्चर मिस कर दिया, पर मेरे दोस्त ने मिस्ड चीज़ें बता दी. I was late for the class, so I missed a bit of the initial lecture, but my friend was kind enough to fill me in. On to number 16. सब दिक्कतों के बावजूद मैं सोच रही हूँ कि अभी इस जॉब को ना छोड़ूं. अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं जॉब छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाऊं. Despite everything, I'm thinking maybe I should stick with this job. I'm just not in a position to leave my job and sit at home. Coming to number 17. अरे तुम्हें क्या फिक्र, तुम्हें तो कोई भी जॉब आराम से मिल जाएगा. इनफैक्ट एम्प्लॉयर की खुशकिस्मती होगी कि तुम उनकी कंपनी में गए. Oh come on, what have you got to worry about? You can simply walk into any job. Honestly, any employer would be lucky to have you on board. So to walk into a job means to find employment very easily. Here's another example. अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी सी क्वालिफिकेशन लेकर इतनी अच्छी कंपनी में आराम से घुस जाओगे, तो ये गलतफहमी भी जल्दी दूर हो जाएगी. If you think you're just going to waltz into a job at such a good company with such minimal qualifications, then you've got another thing coming. यहाँ मैंने walk into की जगह waltz into इस्तेमाल किया, which as many of you may already know is a dance form. So अगर कोई जॉब बड़े ही आराम से मिल जाए तो आप उसके लिए walk into या ज़्यादा casual flair के साथ waltz into इस्तेमाल कर सकते हैं. Towards the end of the last sentence, I also used "you've got another thing coming," which is an effective colloquial way to suggest ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी. Here's an example. अगर तुम्हें लगता है वो बिना मतलब तुम्हारी मदद कर देगा, तो ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी. If you think he's going to help you just out of the goodness of his heart, then you've got another thing coming. On to number 18. तुम्हारे होते हुए ऐसा हो कैसे गया? सेल्स डिपार्टमेंट को हेड करना तुम्हारा काम है ना? How could this happen with you around? You're supposed to be heading up the sales department, right? So as you may already be aware, to head or more casually to head up is to lead something or someone or to be in charge. Then we come to number 19. उसकी मदद करने की जगह तुमने ऐसे मौके पर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया. तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है क्या? Instead of throwing him a lifeline at such a critical juncture, you decided to cash in on his misery. Have you lost all your humanity?
So, to cash in on something means to grab an opportunity, especially to make money. Here's another example. थैंक यू उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही बताने के लिए, रिटर्न्स बहुत अच्छी थी, मैंने फ़ायदा उठा लिया. Thanks for giving me a heads up about that investment. The getting was really good and I cashed in on it. So when someone says the getting is good, it is a casual usage suggesting अच्छा फ़ायदा मिल रहा है. It's usually used in relation with a monetary benefit. For example, बहुत लोगों ने Bitcoin में invest किया क्योंकि बहुत फ़ायदा मिल रहा था. Many people invested in Bitcoins because the getting was really good. And on to number 20. Extra income के लिए तुम अपनी field से related कुछ करने की सोच सकते हो. To make an extra buck, you could consider branching out into something you already know about. So, to branch out into something means to start doing something new but related to what you already know or do. Here's another example. After years of experience in commercial banking, I've decided to branch out into investment banking. And finally, to make an extra buck is a casual way of suggesting some extra income on the side.